Hello friends, welcome to CEC Gurukul Live Lectures. Dear friends, this is a session on career counseling called Pratibha Samvardhan, and today we are going to talk on another important and interesting topics related to your careers. Our topic of discussion is career in data science. You might be hearing a lot about data science and you might be wondering if anyone is there to tell you the exact meaning what data science is and what data scientists do. So friends, for this discussion on the topic, we have with us in our studios Dr. Vishwas Kukreti. Dr. Vishwas Kukreti is a data scientist. He is a PhD from JNU, and we believe that today we are going to gather maximum knowledge through his knowledge and wisdom. So let's welcome our guest, Dr. Vishwas Kukreti, in our studios. Hello sir, welcome to our session on career counseling. Now when we talk about career and when we talk about the modern trends, today in this arena we are talking more about data science. Now what is data science and how it is booming in our country, India? Thank you, Gitikaji, for having me here. It's an honor, and the question you have asked is a very pertinent question, right? So let's dissect the word data science, right? So we're talking about data and science. It's the science about data, right? So everything we do constitutes data. Every step we take, every UPI transaction we do, every place we go, or every monetary transactions we do, everything constitutes data. When it's observed and stored in a particular manner, it constitutes data. And the art and science of extracting wisdom out of it, extracting insights out of that data, it all falls under the umbrella called data science, right? And why is it booming is a very pertinent question. I'm sure all of you must be aware of the blooming field of AI, right? You have all used ChatGPT, large language models, or you have used image generating models, right? We have all used the Ghibli images of our profile pictures, right? So all of these are possible due to the progress in data science, and it's booming because it has a very consumer centered, user focused applications, right? And the NASSCOM, which is the conglomeration of IT companies, predicts that it would have a compounded annual growth rate of around 25%, right? And lakhs of jobs are being added every year to data science. So, and also since India has a lot of tech savvy population which is well versed in English, and we are very well known for our statistical and mathematical prowess, it's pertinent or it's obvious that India sees a bloom in data science. So this is how a data scientist work, and as you have yourself explained that how this industry is growing, and with the passage of time we would be seeing more data scientists in the country, as in when people are aware that data scientists are required in the different arenas. Now if you talk about your journey, you have done your PhD in computational science and then you have switched as a data scientist. How you have bridged that gap, and what appeared to your mind that yes, you could be a data scientist? Thank you, Gitikaji. That's a very interesting question, and I guess a lot of students or viewers listening to us would have that same question. So talking about me, I started with an undergrad in physics, and then I moved to a computational degree from JNU, right? And when I was doing my PhD, I was building statistical models, I was doing programming, I was solving complex problems based on the data, right? Now these are the tools I was learning while I was doing my PhD, right? And these are also the tools you would learn in your masters. Not necessary, you do not require a PhD to be a data scientist, right? So these tools are very common, which you could pick up in your undergrad or in your BTech also, right? So what I realized is that these tools were the similar tools what industry people require, right? The demarcation between academia and industry is just the domains are different, right? So while in PhD I was doing something related to economics, right? In industry I would be solving problems related to, let's say, predictive maintenance of a manufacturing plant, right? The problems, while may appear very different, the underlying tools or the statistical tools remain quite similar, right? You need an acumen for crunching numbers, you need an acumen for understanding the data and understanding how do you take a tabular data or constitute the data and take it from raw numbers to something called insights, right? And both of the academicians or what you study in your undergrad or postgrad, same thing you would do in academia. It's just that you would need a
repurposing of your business acumen, and that's very easy for Indian students to adopt to, because we are very well versed in picking up things. Now, I want to take advantage from your journey in knowing if anyone who is doing or one who is pursuing his or her career in the field of sciences, at what stage, at what point one can discover, yes, data science is also one of the fields. Like you were developing models while you were studying you were doing your PhD. So you have discovered. Now that discovery is very important because this discovery let you know which path you can move on. So one who wants to be a data scientist or one who can discover he can be a data scientist, what is that point, or what are those parameters which gives a clue to you? Right. So the point of inflection when you understand that I can be a data scientist are different for people from different streams, right? So majority of our engineering students do computer science, right? And computer science has a huge overlap with data science, because apart from the algorithms and models which researchers build, the deployment of those models and integration of these models is something which you understand or learn in your computer science BTech undergrad, right? However, for if you're coming from other sources, right, from non-tech backgrounds, even then you do not need to be hesitant of how you can break into data science. Let me tell you the first, if you most of you would know famous data science platform called Kaggle, and the first Kaggle grandmaster was a statistician, not a computer scientist, right? So people who are essentially from number crunching backgrounds, who understand data or who are good with mathematical models. For example, we have people from statistics, people from economics, we even have people from biological sciences, because you would know the underlying mechanisms of data science, or the most prolific algorithm in data science are neural networks, and neural networks are inspired from the neurons in our brain. So every field has a contribution to data science. So since I started a bit earlier, I stumbled upon data science as a mechanism, but now we have students who can pursue their degrees in data science as BTech in data science and artificial intelligence, or BSc in IT with a minor in data science, etc. So now the government is promoting educational degrees which have an overlap with data science along with your major and minor combinations. And also, but if you're from non-tech backgrounds, you can still do some online classes or visit Swayam to learn about more data science and find out how you can break into that field. That is wonderful. If I'm anyone from any of the fields, whether technical or non-technical, I can still pursue my career in data science. Now, Right. necessity is the mother of the invention, and in these crucial years, we have learnt about this emerging trend that is data science. So, if you talk about data scientist, what data scientist does, what they do basically? Right. So essentially, a data scientist wears many hats. Right. So a data scientist is someone who knows a bit of computer science, a bit of business acumen, a bit of statistical knowledge. He also is very well adapted to learn new algorithms. He can understand research papers and build those models out of these research papers. But it's and if you would, and I would like to quote a 2012 Harvard Business Review quote, which termed data science as the hottest job in the 21st century. However, the reality is a bit, it's not so filmy, right? So a data scientist is also a professional who does a lot of data cleaning before he goes on to build some fancy models which can solve your imminent problems, right? So most of the time, I would say 60 to 70% of the time, a data scientist wrangles or cleans out the messy data which you have, right? Now the data generation can happen from different parts, right? So a data generating mechanism could be a human, it could be a process, but all those processes would have noise incorporated in that. So the most of the time a data scientist's task is to extract out signal value from that noise, right? In the rest of the part time, what a data scientist does is writes algorithms or statistical models which take those data sets and extract wisdom or knowledge out of it. And those wisdom is something which a non-tech person, or which a, let's say, a business person can understand. So these things are which a data scientist does for like 90% of his time.
you and me can very well quote while buying the tickets at the railway station and standing in the long queues, or having a money in our pocket so that we could buy certain things. But with the passage of time, एवरीथिंग हैज़ चेंज, सब कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है. अब कुछ सेकंड्स के अंदर मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन करती हूँ और कोई भी सामान जो मैं मंगवाती हूँ मेरे घर पर पहुँच जाता है, या फिर मैं टिकट्स बाय करती हूँ वो कुछ सेकंड्स के अंदर मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन करके उस सामान को अपने घर पे पहुँचा लेती हूँ. ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, और हमारी ज़िंदगी जो है एट फास्टर रेट दौड़ रही है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये डेटा साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है, या डेटा साइंस इस फील्ड की वजह से आज चीज़ें बहुत आसान लगने लगी हैं? वी हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, वी हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग द डेटा, एंड वी हैव स्टार्टेड फाइंडिंग द सॉल्यूशंस. जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न गीतिका जी. अब आप में से बहुत सारे लोग 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं. अब आप ये सोचिए कि आपके घर तक आने के लिए डिफरेंट रूट्स हैं, बट आपका जो राइडर है, डिलीवरी राइडर है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूट लेना है कि वो मिनिमम टाइम में आपके घर तक पहुंच सके? तो ये सब डेटा साइंस हमें मदद करता है कि हम देख सकें कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जा सके. और डेटा साइंस का ही एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग, इसी का एक सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये सब जब मिल जाते हैं और बिजनेस एक्यूमेन मिलता है और साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज मिलते हैं, हमारा जीवन डेफिनेटली आसान होता है. पहले जो काम, स्पेशली जो काम जैसे प्रोग्रामिंग है, जो प्रोग्रामिंग करने में आपको शायद 3 दिन लगते हैं, अब आप वो प्रोग्राम एक चैट जीपीटी की मदद से आप शायद आधे घंटे में, 1 घंटे में लिखवा सकते हैं. और साथ ही साथ सिर्फ डेटा साइंस का प्रभाव सिर्फ प्रोग्रामिंग या फिर टेक फील्ड्स तक नहीं है. अगर जो मैं आपको बताऊं, क्रिस्टी नामक एक संस्था है जो पेंटिंग सेल करती है. तो अभी पिछले साल $4.5 मिलियन में एक एआई पेंटिंग बिकी है. तो जो डेटा साइंस का प्रभाव है वो पेंटिंग जैसे जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस फील्ड्स हैं उनमें भी उतना ही प्रकट हो रहा है. तो डेटा साइंस इज़ डेफिनेटली, हमारे जो भी हम कार्य करते हैं वो सब एक तरीके से डेटा में रूपांतरित होता है. हमें असल में उतनी नॉलेज नहीं होती कि हम देखें कि उसमें पैटर्न्स क्या रिपीट हो रहे हैं. असल में जो भी हम काम करते हैं उसमें कुछ हिडन पैटर्न्स रहते हैं. तो डेटा साइंस हेल्प्स अस एक्सप्लॉइट दोज पैटर्न्स टू फाइंड आउट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज. And that's how data science is making our life much more useful and easier for us. And very well, I can quote that this field is very interdisciplinary. अब देखिए ना, हमने जॉब मार्केट भी क्रिएट की और साथ ही साथ बिजनेस मॉडल्स भी डेवलप कर लिए. बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, एंड वी आर गिविंग सोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस मॉडल्स, ऑफ कोर्स. Now, if you talk about the skills, what skills are required to be a data scientist, or what skills do we look in a data scientist? जी, असल में एक डेटा साइंटिस्ट के लिए 3 मुख्य स्किल हैं जो उसको आनी चाहिए. सो फर्स्ट इज़ द टेक्निकल स्किल्स विच यू रिक्वायर. सो टेक्निकल स्किल्स होंगे आपके स्टेटिस्टिक्स, आपकी गणित, आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा आनी चाहिए, कैलकुलस थोड़ा बहुत आना चाहिए. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन सब विषयों में एक पीएचडी चाहिए. इन सब विषयों का आने का मतलब है कि अगर जो आप इन चीज़ों से आपको कोई एक प्रॉब्लम हो, तो आप एक बिजनेस प्रॉब्लम को, एक ऐसी प्रॉब्लम जो एक नॉन टेक्निकल बंदा हो उसको आप एक टेक्निकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकें. अब आपके पास जब ये टेक्निकल फाउंडेशंस हैं तो आपको अब कंप्यूटर से बात करने के लिए भी आना चाहिए. अब कंप्यूटर से बात करने में आपको मदद करने के लिए बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होनी चाहिए. तो जो डेटा साइंस का फील्ड है वह मुख्यतः पाइथन नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है. तो जो भी इसकी मुख्य लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन की, जो भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की जो भी लाइब्रेरीज़ हैं मुख्यतः पाइथन में लिखी गई है. तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना अनिवार्य है. साथ ही साथ अगर जो आप ऐसे फील्ड्स में काम करते हैं जहाँ इकोनॉमिक्स का ज़्यादा काम है, तो वहाँ पे एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर का यूटिलाइज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ हम डेटा साइंस की बात करते हैं और हम कह भी रहे हैं कि आप डेटा पे काम कर रहे हैं, और डेटा आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है. इट कुड बी इन टेराबाइट्स, राइट. सो गीगाबाइट्स, पेटाबाइट्स, आपका डेटा बहुत बड़ा हो सकता है. तो आपको एक और ऐसी भाषा आनी चाहिए जो आप उस डेटा के साथ कम्युनिकेट कर सके. तो ऐसी एक भाषा है सीक्वल, स्टैटिस्टिकल क्वेरी लैंग्वेज, जहां आप देख सकते हैं कि आपके डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं.
और इसी के साथ साथ आपको एक एनालिटिकल माइंडसेट भी आना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे अपडेट कर सकें. सो आपके अंदर एक इनहेरेंट क्यूरी होनी चाहिए, एक पैटर्न क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक पैटर्न रिकग्निशन होना चाहिए. आपको एक मन होना चाहिए कि अच्छा आज ये नया रिसर्च पेपर आया है, नया एल्गोरिथम आया है डेटा साइंस में, क्या मैं इसका यूटिलाइजेशन अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कर सकता हूँ. बट साथ ही साथ गीतिका जी मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ये तो आपके जो हार्ड स्किल्स होते हैं वो हैं. साथ ही साथ एक डेटा साइंस में जो आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका कम्युनिकेशन है, आपको, क्योंकि एक जो डेटा साइंटिस्ट है उसको टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ ऐसे फील्ड में भी आपको बताना पड़ता है जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो आपके बिजनेस लीडर्स हैं. ज़रूरी नहीं है कि उनको टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज हो. सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दोज कॉम्प्लेक्स फाइंडिंग्स टू नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स वेरी ईजीली. आपको साथ ही साथ डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर जो आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री फ्लोर पे चीज़ें कैसे काम करती हैं. आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं एक पेशेंट के डेटा के रिकॉर्ड की, वो कंसिडरेशंस क्या हैं. साथ ही साथ आपको ऐसी सारी एथिकल जो कंसर्न्स हैं उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप देखें एआई डेटा साइंस का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, तो आपको जो एथिकल हैं कि यह गलत और सही है उसकी भी नॉलेज आपको रखते हुए ऐसे एल्गोरिथम, ऐसे डेटा साइंस के मॉड्यूल्स डिज़ाइन करने चाहिए जो ह्यूमैनिटी के लिए लाभदायक हो, ना कि जो नकारात्मक प्रभाव सोसाइटी पर दें. So you have explained what you are, because you are a data scientist and you are explaining in the same manner, because we are non-technical people, but with an ease you are explaining what a data science is and what data scientists basically do. When we look and we go forward for a particular course, हम यही सोचते हैं कि इसमें डिग्री, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमास जो भी अवेलेबल है वो कैसे प्राप्त होगा. सो आर देयर एनी कोर्सेज अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया? जी जी, जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है, एजुकेशन भी अपने आप को अडॉप्ट करती रहती है. द डेटा साइंस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि देयर इज़ नो सिंगल करेक्ट एजुकेशनल पाथ फॉर दिस. आपकी जो ट्रेडिशनल डिग्रीज़ होती हैं, कंप्यूटर साइंस हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, इंजीनियरिंग हैं, अगर जो आप इन डोमेन से आते हैं तो आपके लिए डेटा साइंस में एंट्री लेना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप में एक वो नंबर क्रंचिंग एबिलिटी जिसको कहा जाता है वो पहले से ही मौजूद है. आपको थोड़ा सा बिजनेस एक्यूमेन उसके साथ जोड़ना है एंड यू विल बी अ वेरी गुड डेटा साइंटिस्ट. बट जो नॉन टेक बैकग्राउंड्स के हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. देर आर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस, देर आर बूट कैम्प्स, देर आर मूक्स, राइट, देर आर कोर्सेरा, स्वयं के आप कोर्सेज कर सकते हैं. देर आर डिफरेंट थिंग्स विच यू कैन पिक अप. So data science requires action, not your particular degree. So if you have the skill, it is very easy to break into a data science job, right? So अगर जो आप visible हैं, आप काम कर रहे हैं, आप दिखा पा रहे हैं कि मैंने data science में ये project बनाया है, and this is and जो data science का आपका project है, that should be related to something which a business problem could wants to be solved, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चीज़ जो reinvent हो चुकी है, जिसको अंग्रेजी में कहावत है reinventing the wheel. If you are reinventing the wheel, you should maybe not choose data science. However, if you are curious enough to solve a new problem, right, आपको data science की तरफ definitely आना चाहिए, आपको data science के बारे में देखना चाहिए, और आपको skills ज़्यादा चाहिए, आपको degrees की इतनी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है. And all those students who are into programming, or those who have learned statistics, or those who have business knowledge, they can be very well fitted into this particular area, if I'm not wrong. जी. So what programming language one requires to learn? What is that language? Because we have lots of languages and lots of programming. So क्या सीखा जा सकता है और क्या आना चाहिए? जी, तो जो मुख्य भाषा है वो है आपकी पाइथन. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, आपको पाइथन आना अनिवार्य है, क्योंकि आपके जो भी मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स हैं, आपके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉड्यूल्स हैं, आपके डेटा साइंस के मॉड्यूल्स हैं, वह बेसिकली आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं. पाइथन साथ ही साथ आपको विजुअलाइजेशन के भी बहुत अच्छे मॉड्यूल्स, सीबॉन हैं, प्लॉटली हैं, मैटप्लॉटलिब हैं, ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये पाइथन में ही है, एंड यू कैन वेरी ईजीली टेक दीज फ्रॉम डेटा टू इम्प्लीमेंटेशन. और साथ ही साथ जब हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो हम साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि यह एल्गोरिथम्स कहाँ डिप्लॉय हो सकते हैं, राइट, क्योंकि आपका एल्गोरिथम सिर्फ आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही नहीं रह सकता. इट हैज़ टू बी गिवन टू नॉर्मल पीपल, एंड पाइथन इज़ अ वेरी नाइस लैंग्वेज विच कैन इनकॉर्पोरेट दिस डिप्लॉयमेंट.
So the primary language you need to learn for your data science degree or data science job is Python. साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत आप R सीख लीजिए, SQL सीख लीजिए, साथ ही साथ आपके जो थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस की जो चीज़ें होती हैं, जो आपका इंटीग्रेशन होता है, बाकी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, आपको वो भी सीख सकते हैं. जैसे आप डॉकर हैं, कुबरनेटीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं. Again, it's not, you do not have to be an expert in these fields, but it's good if you have knowledge of these things, because they let you easily talk with teams who are well proficient in, let's say, Docker, right? So if you would know how you can take one model and deploy it over web, right? So that would help you much more than any person who just knows algorithms. So programming language के लिए आप Python सीखना आपके लिए अनिवार्य है. So this is another basic skill which one requires to learn. Now the question arises, today it is MNC culture, startup ecosystem. Now how does the data scientist, this area applies in the Indian scenario? अगर भारत की बात की जाए तो कहाँ फिट इन होता है, किस और उसका स्तर कितना है, कितना बड़ा है? हाँ जी, तो अगर जो आप देखें, आपके फ़ोन में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस चुन सकते हैं. भारत विविधताओं का देश है. हमारे देश में ही 22-23 मुख्य भाषाएं हैं, 1.4 बिलियन लोग हैं, सबका खान पान अलग है, सबका रहन सहन अलग है. तो जो डेटा जनरेशन मैकेनिज़्म है इंडिया का, वो बिज़नेस प्रॉब्लम्स में भी बहुत डिफरेंट है, राइट. सो हमारी जो लोकल कंपनीज है, दे ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज फीचर्स इनटू देयर मॉडल्स, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर जो आप देखेंगे, व्हाट्सएप आपकी लोकल भाषाओं में भी उपलब्ध है. व्हाट्सएप और आपकी जो बाकी आपका यूपीआई है, वो भी आप अपनी उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. आपका जो हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो यूपीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर डूइंग सच अ गुड वर्क दैट यूपीआई इज़ नाउ एक्सेप्टेड इन मेनी फॉरेन कंट्रीज टू. सो जो हमारा डेटा साइंस का इंडियन कंपनीज़ का काम है, दैट इज़ ग्रोइंग एवरी डे, राइट. सो एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर हेल्पिंग to focus on these implementations, and a lot of money is being poured into this to become, and we are good in AI, right? So we are Indians, we are good with number crunching, mathematics. We gave the world zero. So anything which has to do with mathematics has to be an Indian thing. So Indian companies are very good. We do a lot of consulting. I would say the world runs on Indian brains, right? For example, if I talk about the Google CEO Sundar Pichai, he said that AI is more profound than fire. सो ही सेड जो एआई का इन्वेंशन है, मुझे लगता है कि ये आग के इन्वेंशन से ज़्यादा ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो सकता है. सो दैट इज़ हाउ वी इंडियंस आर इनकॉर्पोरेटिंग एंड लर्निंग अबाउट डेटा साइंस, एंड ऑल्सो we are making others understand data science. So a lot of consulting projects all around the world are done in our Indian cities. So Indian companies are solving the problems of the world. And that's why Indians are hired at different levels and by different MNCs, different countries, so that this is called the brain drain, where the Indian brain is being taken for problem solving purpose and developing new things. Now, if a fresher wants to start, how a fresher can start with this particular field? So again, the thing is, if you start from a tech background, you already have some knowledge of what a data science thing is. So you have to move from a core computer science kind of thinking. So data structure and understanding data structure and algorithms is very nice, but you, for a tech person, you would also have to a need to understand research papers, right? So data science is a growing, evolving field. So every day there are new algorithms, new models, and new ways to solve a particular problem arising. So for a tech person, you need to understand that if you know programming languages and you have the statistical know-how, then the third thing you need to learn is the business acumen or the domain knowledge. So once you are well proficient with domain knowledge, and that only comes by doing things, right? So once you are learning by doing, it is very easy for you to understand data science or get a data science job. Now for our students who are from non-tech backgrounds, right, and they want to break into data science, so I would advise them to first follow key resources. So we have multiple blogs, like we have Towards Data Science, we have our Indian blogs, Geeks for Geeks, right? So we have KD Nuggets. So start reading these things and see how what people are doing, what this field
composes of, right? So once you have an idea what you want to do or what kind of domain are you interested in data science, you pick up one tool and you pick up one business problem and try to solve it, right? So you take up one problem, and again the thing is not to be a rockstar developer in the first go. The thing is you need to understand the whys and the hows and the ifs and the buts of the model which you are working on. So it's much better if you understand, say, a simple linear regression problem rather than if you have a portfolio of tools in your CV, right? So if you, because it's of no use to a person who is hiring you if you know multiple tools but do not know the where do you can implement them. So it's much better if you can learn about one particular tool in such depth that you know how a particular business problem can be solved with this particular tool. Now a data science community is also very flourishing, right? So there are multiple meetups होते हैं, आपके webinars होते हैं, आपकी आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. सो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इन वेबसाइट्स पे, इन आपके जो भी आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वेब पेजेस पे जाके आप देखिए कि वहाँ क्या काम हो रहा है और क्या वहाँ ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है. सो आप उन कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, आप वहाँ के कंप्यूटर साइंटिस्ट से बात कीजिए, आप वहाँ के प्रोफेसर से बात कीजिए और आप जानिए कि डेटा साइंस में अभी असल में क्या काम हो रहा है कि मैं एकदम से वो चीज़ पकड़ लूँ, राइट. एंड अगेन पिकअप दैट थिंग विच यू आर गुड विथ. साथ ही साथ अगर जो आप नॉन टेक बैकग्राउंड से ट्रांजिशन कर रहे हैं, start picking up tools like linear algebra, right, matrix multiplications, simple statistics, hypothesis testing, etc., which help you. So once you get a leg into the data science platform, data science thing, you need to grow, right? So, and that growth is only possible if you are well versed with these other fundamentals. So the transition path for both of these tech and non-tech backgrounds is different, but eventually you will end up in the same field. So you do not need to worry about your degrees, you just need to focus on your skills. Dr. Vishwas, you have laid a very important point over here that the need of the hour is we need to listen to the people who are already into the field or those who are continuously and persistently working so that the good data scientists could be produced within our country. So thank you so much for giving us this wonderful session where we have discovered what data science is and how data scientist works. So thank you so much for giving us this wonderful session, and dear friends, we believe that your feedbacks are very, very important for us to keep writing us, keep watching us. We would be meeting again and would be discussing more. Thank you so much.